panelists are very senior, learned experts now of this Kanun Ki Pathshala. I have with me Dr. Raj Bokaria, Dr. Divya Singhal. Dr. Divya, are you joined? I'm here, Dr. Yeah. Welcome, Dr. Divya. Dr. Leena, Dr. Vandana Gupta, I can see, has also joined. Dr. Ila Gupta and Dr. Sonal Bhatla. So without much delay, I think all of us are very well known in this August forum. And without wasting much time, we'll just straight away go to the reverse panel questionnaire. I'm not able to portray my questionnaire, but I have just mailed messaged it to all of you. And the first set of questions, I would request Dr. Divya. The first three questions, Dr. Divya, you please ask Dr. Geetendra. Yeah, thank you, Dr. Shakuntla. Very good evening, Geetendra and all seniors and friends. So my first question is very much similar to what is going on previously. First presentation. Which company should we opt for? Which insurance company? Please name the company for professional indemnity, because this is getting very confusing. No, I cannot name, madam. I have given that how to select the good thing. All companies have some good thing and some pros and cons are there. You have to select that. Okay. Maybe you could, just tell us a few names so that we could select from the names. Like you named the Oriental Insurance Company, and there was some mention about Cover You, and then Apex. Apex का तो अपने owner का भी बता दिया. So at least we should get some kind of help, sir. So what I have conveyed to you is that take the good insurance coverage and select the company which have this quality. Okay. And whenever you will select a company, if you are in a good, you can definitely negotiate with that. And it is always advisable at technical level you should do it, rather than So your question. अब आ रही है आवाज? Yes, now better. Madam, I am in Jalandhar, so there is connectivity issue. थोड़ा कभी हो सकता है. I am in hotel. Sir, thank you for the answer, but I feel then you being a bridge as a medical legal consultant. यहाँ पे I will chip in here. मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमारा न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो मैं आप जा रही हूँ उसका एटलीस्ट बनता ये है कि आपसे पैसे ले जाएगा और शाम को आपका वो आ जाएगा. So I know this much, and you can talk to him one to one. He's very nice. But I think Sonal Bhatla can help, because her insurance, she only pays extra 3,000 rupees, and for that she does whole legal coverage, everything coverage. So जरा पता करो भाई उसी के बंदे के साथ करानी चाहिए हम लोग को. क्या वो हमारे से change कर सकते हैं? That also she can answer. Dr. Sonal. Dr. Sonal, your personal experience? Yes, I had a very good experience with my insurance company, and I've been hearing about Apex. I have Apex only, but I had a wonderful experience. I joined them in 2002 without knowing that this will be of a lot of benefit to me in future. You see, I have been regularly paying their money, and they were connected with Oriental earlier, but later on they shifted on to ICICI Lombard. And even my civil cases are handled by them without any cost to me. The lawyer is also provided by them. But the most important thing is that I did this course from MAM, and I could handle my cases myself also. Like I drafted my replies, and then their lawyer approved, and then we filed in. This was the process. Excellent. But they are handling my civil cases also. They are paying the lawyers for my civil cases also. Dr. Sonal, I also like to say that Geeten says this thing. Apex का मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है. मेरा एक केस स्टेट फोरम में चल रहा है. हमेशा वो लोग मुझे बताते हैं कि ये डेट है, ये डेट पड़ गया है, वो लोग पार्टी दूसरी नहीं आ रही है. And very very meticulous they are. मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. But I don't know. मैडम, I have never said कि आप मत लीजिए.
पर हाँ, ये है कि मेरे को जो हमारी फील्ड में हम इसमें है मेडिको लीगल में, हाँ, तो मैनी ऑफ द पीपल आई कैन नेम देम, डॉक्टर प्रतिभा हांडा एंड प्रदीप हांडा इन लुधियाना, है ना, दे हैव बीन लिटरली हेरास्ड, ओके, मैनी पीपल इन छत्तीसगढ़। नहीं लेना चाहता हूँ कि किसी को पर्सनल प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं, डेफिनेटली होगा, कई जगह अच्छी सर्विस होगी, लेकिन कई जगह ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं कह रहा हूँ जब आप सेटिस्फाइड हो तो आप नॉट अगेंस्ट, इवन आईएएम में पंजाब हैज रिकमेंडेड नेम ऑफ एपेक्स। सर आपकी वॉइस फिर ब्रेक कर रही है, सर आपकी वॉइस फिर ब्रेक कर रही है। अच्छा, आईएएम में पंजाब अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। Yes, तो आईएएम में पंजाब ने तो रिकमेंड किया है मैडम कि यू शुड टेक इंश्योरेंस विद एपेक्स। was also very bad with the apex. So what we are seeing is that there is a mixed kind of experience of everyone, but so we have to be very, very careful. And I think the most important thing is the bridging which medical legal expert like Dr. GEETENDRA, Dr. Gaurav can do. So they are the ones who are actually doing very, very helpful. So the next question is, sir, that how much should we take the indemnity annually? Like what should be the minimum cover for an OB-GYN practitioner? मैडम 1 करोड़ रुपए। 1 CR. So this just to 1 CR. Yes, Dr. Geetendra, my provider is mentioning that for non-surgeons it's 1 CR and for surgeons 2 to 3 CR they are mentioning. So Yes. what, मैडम अब तो देखो what would be the... आप किसी से भी बात करोगे ना तो वो अपना धंधा करने के लिए आपको बोलेगा अभी 1 करोड़ क्यों लेते हो, 2 लो ना, 3 लो ना। तो अभी भी आप और कहोगे कि आई वांट टू टेक 1 करोड़ रुपीस इंडेमनिटी, तो कहेगा नहीं 2 की लो, 2 के लिए अच्छा रहेगा। तो ये तो बिजनेस हो गया मैडम, दिस इज ऑल बिकम बिजनेस। okay. But like you said, minimum recommendation is 1 crore. yes, बाकी आप अगर अंबानी को ट्रीट करते हो तो 100 करोड़ भी कम पड़ेगा। So can I ask one small question? Does this depend on the kind of clientele an individual Yes. has? Yes. So we should take a call on it individually. I think Yes. that would be the best thing. Yeah, Yes, that very makes right. sense. And in a place Minimum should be 1 crore. Yes, Can go high. that is the consensus. yes. मैडम जजेस पूछते हैं आपका कवरेज है कि नहीं, कितना का कवरेज है, जितना उनको पता है कितना कवरेज है तो उतना तो आपको फाइन लगाएंगे ही लगाएंगे। So I like have found a very beautiful association. If you do morning practice, you don't get Google patients. And these Google patients are very expensive. They are the ones who are going to sue you. They are the ones who will question you about everything. If you do morning practice, you're doing a safe practice with housewives. That's a good one. That's a good So, comment. sir, our next question is to you again. In a legal suit, can we hire our own lawyer? I mean, like sometimes it becomes a necessity, in fact. So if we hire our own lawyer, we still have the insurance company with us. Does the insurance company pay for our lawyer, and can we hire our own? You tell the insurance company that you take that lawyer on your panel. And No, the insurance company may say that they will pay less for them. Okay. Madam, so actually, let's hear, sir. No. Yeah. It is not like that. Okay, I think we have lost Dr. They do take Geetendra. it. Yeah, they do allow. Yeah. Your comment, sir. Am I audible? Yes, now audible. now audible. So basically, madam, क्या होता है कि जो इंश्योरेंस का छोटी मोटी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इनके साथ जो लॉयर्स अटैच होते हैं ना, दे आर वेरी लो पेड, और अच्छे लॉयर कभी इनके साथ जुड़ते कभी नहीं जुड़ते। The problem in Ahmedabad is they are running one professional protection scheme. So voice is breaking, sir, voice is breaking. एडा कुछ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। अभी ठीक है, अभी ठीक है। Better now. So basically क्या है कि they have appointed lawyers who are taking
2,000 rupees for a reply of notice. Now, which good lawyer will come? तो जितने भी अच्छे लॉयर थे वहाँ पे डॉक्टर MM जोशी साहब थे, एक हिमांशु ठक्कर थे, बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, सब छोड़ के चले गए इसके। और नाउ द लॉयर्स व्हिच आर प्रेजेंटिंग द केसेस, एवरी केस इज बीन लॉस्ट, सारे केस अब हार रहे हैं डॉक्टर और सब त्रस्त हो गए उस स्कीम से। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे लॉयर हमको हर रोज काम आते हैं, अवर यू से भी आते हैं, एपेक्स से भी आते हैं कि हमारे साथ आप जुड़ जाइए बट व्हाट से हम आपको पर केस 5,000 रुपये देंगे, 10,000। और सारी इंश्योरेंस कंपनी है ये तो बिजनेस कर रही है मैडम। Dr. Gaurav wants to speak. Yeah, so thank you, ma'am. Just wanted to supplement Dr. Geetendra Sharma's answer that no, these lawyers are not only lowly paid, they are simply doing a cut and copy and paste job. So they are without applying mind. See, जब कोई सीरियस पर्सन चाहिए होता है, जवाब फ्रेम करने के लिए, आपका रिटन स्टेटमेंट बनाने के लिए एक एक लाइन का, एक एक कंप्लेंट का पोस्टमार्टम करना पड़ता है और उसको सपोर्ट करना पड़ता है विद फैक्ट्स backed by judgments. All these advocates who are on the panel of these companies, service providers, they don't have time for this. उनके पास डेली कंप्लेंट्स आ रही हैं और उसका जवाब बनाना है, तो उनके लिए एक स्पाइनल जॉब हो जाता है। बट जब आपको एक ग्रे मैटर का एक जॉब चाहिए तो उसके लिए कोई डेडिकेटेड पर्सन रहना चाहिए। दिस इज माय humble request. So which means that we have to hire our own lawyer? Does that mean Yes, yes, absolutely. Doctor, can I chip in here? Please, ma'am. I find, you have to have are going to make, and that's why I said that, Dr. Gaurav and Dr. Geetendra, you should join hands together and, make a larger group. So, one group has got people who are stationed and, who can transfer the things. The job has been, what I find is our cases are handled by the medical legal expert. Medical legal expert writes the whole thing, gives you all references, everything. जो भी आपको जरूरत है केस में, वो सारी चीज आपको देते हैं. And then they say this is a document. आप अपना local lawyer ले लीजिए. Local lawyer आपका बस वो काम इनकी guidance में वो करेगा. And I find, this has worked very, very well. Absolutely, and there was a question that how to identify a medical legal person. See, now it has become very fashionable for every doctor in the middle age to pursue a LLB course. Now there might be, अगर मैं चलो for example अपने area की बात करता हूँ, East Delhi, there are probably more than 30 or 40 doctors who have done LLB along with their post graduation or whatever subject. But how many are seriously practicing? If you cannot even count on fingers. So the cases किसके पास हैं, कौन fight करता है अपने client के लिए? That is the question. So simply ask the doctor, are you going to court? Are you preparing defense? कितने written statement आपने अपनी life में बनाए हैं? कितनी police complaints को या DMC या कोई भी state medical council की inquiries के आपने replies बनाए हैं? You will get your answer in a moment. In fact, if we have a group medical legal consultant, I think all of us will transfer our cases to that person with the, like the kind of suffering that we have, with the kind of legal experts that we are dealing with. Every answer that they make is like, even we are not satisfied with their answers. So answers to my question, like the question was which professional indemnity, which insurance company we should take, that is answered indirectly, that we have a medical legal expert in between. And even for the lawyer, the answer is that we should have the medical legal expert who, pens down whatever the points are, because these lawyers are actually not the right experts. They won't know what. Here I just wish to tell you, medical legal experts होंगे आपके पास, क्योंकि फाइनली उन्हें ही ड्राफ्ट करना है. बट आपको अपनी स्पेशलिटी के भी 2-3 अच्छे माइंड को लेना चाहिए, जिनका थोड़ा सा हल्का सा इन केसेस के साथ डीलिंग करने का वो है, तो वो हाईलाइट कर देते हैं कि ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है.
So I think, that is what is the expert of your own group. But medical legal experts are the ones who are going to do the job for you. Thank you, ma'am, and thank you, Yes. sir. I think my questions are over for the time being. Over to you, Yeah. Dr. So now, Dr. Vandana, please ask your questions. Yeah. Are you there, Dr. Vandana? Yeah, I'm there. Yeah, Yeah. sir, I just wanted to ask, if there is an emergency, will they be providing a lawyer service in such a situation? No. We have taken a indemnity, and that indemnity company, will they provide a lawyer if there is an emergency? No. मोस्टली मैडम नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सब जगह उनके पास लॉयर्स की लिस्ट नहीं होती। तो Right. अगर इमरजेंसी होगी, जैसे आपके यहाँ मॉब वायलेंस हो रहा है और Right. आप उनको फोन करोगे हमको गाइड करो, तो नोबडी विल गाइड यू। ओके, तो मॉब वायलेंस तो वैसे ही कवर्ड ही नहीं है इंडेमनिटी में, हमारे कवर्ड ही नहीं है। तो विल दे प्रोवाइड प्रिवेंटिव इंडेमनिटी और कंसल्टेशन इन केस of we doubt there is a litigation in future? I think you answered in your presentation. No, they don't provide. It's only a medical legal consultant. मैडम आप म्यूट हो, शारदा मैडम। So only a medical legal consultant. अब जब भी आपको कोई नोटिस आएगा, आपको अपनी इंडेमनिटी इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया ये मेरे पास संकट आ गया। नहीं, I am talking about without notice. That is what I am thinking. Without notice वो लोग पिक्चर में नहीं आएंगे ना, विदाउट नोटिस पिक्चर में नहीं आएंगे। So what constitutes medical negligence in their, according to their definition? डेफिनेशन तो सेम ही है मैडम नेग्लिजेंस की। Same है, it's for everybody, it would be the same. To do something what normal prudent doctor will never do, and not to do something which normal prudent doctor will always do in the practice. So that is the definition of negligence. So it is covered by the same thing, by the legal status and the medical legal status. So, Dr. Vandana, I will request the next questions to be asked by Dr. Vandana from Shalimar Bagh. There is a little bit of last question I'm asking. How much percentage will they compensate? Or is it the full compensation they give? Madam, it is the compensation for which you have indemnified. तो सपोज आपका 1 करोड़ है तो 1 करोड़ तक का वो देंगे। Okay. अगर उससे ऊपर होता है तो नहीं देंगे। Okay. Thank you, sir. Question 8 and 9, Dr. Vandana, are you there? She was there some time back. Then you please continue, Dr. Vandana. Please continue. Okay. So will they share with us the cases they have helped in past, or they have fought in favor of a doctor? कौन? इंश्योरेंस कंपनी? Yeah. ना, इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं होता है। और होता भी हो तो शेयर नहीं करते हैं। Okay. And out of court settlements, do they negotiate that for us? मैंने बताया जैसे किसी ग्रुप इंश्योरेंस में they give such benefit. तो अगर वो है तो होता है। बाकी आजकल तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में there is a provision that you. So your voice is breaking again. Sir, can't hear you. Sir का नेट बीच में जा रहा है. I think he's just going to come back. He's trying to come back. Yeah, he's trying to come back. The Apex Insurance, they advise you without notice also, if you talk to them, if you feel there is a patient who's gonna cause trouble. That's what आप कल मैडम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से आपने लिया हो ना इंश्योरेंस, आप उनको फोन करिए कि हमको नोटिस नहीं आई है, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट चेक कर दो भाई सही है कि नहीं है, बिकॉज वी हैव एप्रीहेंशन दैट वी विल बी सूड। Okay, thank you, sir. So my questions have been answered. Yeah. So Dr. Raj Bukaria, I would I will just request you to take question number 10 and 11. Before that, can I come in for a moment, ma'am? Please, Yes, sir. Please. Please. So there was this question about an emergency. What an emergency you got to do is, सबसे पहले see there is जब भी complaint आई, क्लिनिक हुआ, नर्सिंग होम हुआ, हॉस्पिटल हुआ, पुलिस आने वाली है, ठीक है, पुलिस कॉल भी हो गई. You sometimes, most often, you have a window of couple of hours to maybe a day, maybe a few hours, that you can have your paperwork screened by a professional medical legal consultant. That is where the role comes in of your answer to emergency help. So immediately papers को scan कीजिए, PDF file बनाइए और भेजिए, you know.
immediate. I was we asking, this help would be given by the company, indemnity company, or not? We'll have that is what Dr. Geeten Sharma said. Ki it is highly questionable कि emergency में how much are they reachable after 5 o'clock? You know, your नहीं colleague. डॉक्टर, वो नहीं करेंगे, ये मान के चलिए वो नहीं करेंगे। आपको जो मैं बोल रही थी, मेडिको लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज आर ओनली मेंट फॉर दैट। आपने स्टिल बर्थ हो गया, आपको मालूम है हंगामा होने वाला, तब आप वही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप उसकी फाइल को स्कैन करके भेज दीजिए, वो पढ़ लेंगे, बता देंगे आपको कि डॉक्टर साहब ये करना है, ऐसे फाइल कवर करनी है, ऐसे पुलिस को इन्फॉर्म आपने करके रखना, ये सारी बात आपको बता देंगे। Exactly, yes. That will be done by the medical legal expert who has been hired separately from the indemnity. Oh yes, yes, absolutely. You have to take that cover, 365 days cover. So that is besides indemnity, ma'am, no? Or it yes, will absolutely. Yes. Besides indemnity. Besides indemnity. Yes. And what about the out of court settlement? Will the insurance company look after that? मैडम वो आपकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। आपने ग्रुप इंश्योरेंस लिया और उसमें लिखा है प्रोविजन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का, तो उसमें लिखा होता है कि हाउ दे विल डू द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सो देयर इज अ कमेटी ऑलवेज। तो 2 डॉक्टर होंगे कमेटी में, 2 इंश्योरेंस के आदमी होंगे, एक आर्बिट्रेटर जो बीच का मीडिएटर होगा। ग्रुप की बात बताती हूँ, इंडियन यहाँ पे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने ग्रुप इंश्योरेंस ली, हमारे जैसे लोगों ने उसमें किया। हमारे पास 2 केसेस हमारे पेंडिंग थे, उन्होंने हमें दिया ही नहीं, पैसे हमारे ले गए, हमें दिया ही नहीं। फिर हम लोगों ने कहा भैया हर बात तो एक दिन में आ जाता है, आपने क्यों नहीं दिया? तो कहते डॉक्टर साहब आप जैसे केसेस को नहीं लेंगे। अरे फालतू को, अगर हमारे पास केसेस है इसीलिए तो हमने आपको इंश्योरेंस करी, आपको देखने के लिए थोड़ी ना इंश्योरेंस करी है। So my experience with insurance company is extremely bad with group insurance also. Right. Dr. Raj, please. Yeah, I have 2-3 questions for you, Dr. Geeten. One is, when we have our own lawyers, so do they pay for it? Second question is, do they give, when we do the insurance from the company, do they provide the list of the lawyers? And whenever there is a need, they give you the lawyers, or we have to choose from their list if we want to? So again, madam, मैंने बताया it depends on company to company. आजकल most of the companies are allowing you to appoint the lawyer and they pay the fee, क्योंकि हर एक उस जगह पे उनके पास lawyers नहीं होते हैं। So if they have any list, they will provide you the list and they will ask you to select out of it. और अगर आप अपना लॉयर रखना चाहते हैं तो विद ड्यू परमिशन उनसे पहले से बात करिए आप कि हम हमारा लॉयर रखना चाहते हैं, तो विल यू पे, और फिर वो हाँ बोलते हैं तो आप अपना लॉयर रख के और कर सकते हैं। And from the company, can we ask for the police support if there is some threatened to us? No. Do they help in that? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्रिमिनल उसमें कुछ भी हेल्प नहीं करती। अच्छा, another one thing, if I am working in one hospital this year and that if I add one more hospital, so that insurance company will add that hospital from the retroactive? Yes. So you have to provide the list of the hospitals where usually you operate or you do the practice. And another one more question, Dr. Geeten. I think in your lecture, in the previous lecture, you have said that we should get the insurance even after the death of ourselves. नहीं, मैंने कभी नहीं कहा मैडम ऐसा, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा। Then I don't know, somewhere I heard कि the insurance. मैं बता रहा हूँ कहाँ सुना। Dr. Neeraj Nagpal is recommending this. Yeah, somewhere I heard. Because उन्होंने ये कहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो डेथ के बाद भी कंटिन्यू केस रहता है ना, अगर आपके ऊपर केस हुआ तो, एंड द कंपनसेशन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम योर लीगल हेयर्स, ऐसा प्रोविजन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। लेकिन डेथ के बाद मैडम कभी कोई इंश्योरेंस आपको नहीं देगा। I am always. That is what I was wondering. On which name you can insure? So I am always countering Neeraj Nagpal's this thing that कोई आदमी मर गया तो उसके नाम पे इंश्योरेंस मिलेगा ही कैसे? That is what I was going to ask you कि on which name the legal heir will.
See, the problem is because, see, Neeraj Nagpal is my very good friend, okay, but the problem with him is that he has good knowledge, good experience, but he has no legal knowledge. The That is the second problem. वो question, lawyer नहीं है, वो lawyer नहीं है, वो अच्छे he's डॉक्टर a हैं, gastroenterologist. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं MLAG के थ्रू, लेकिन वो lawyer नहीं है, इसलिए उनको इस चीज की पता नहीं. Second question, I think it must be his lecture only. He said that you should have a breakup in your insurance. दो कंपनी से लो, इसका भी मैं उनका विरोध करता हूँ. From the same company in a breakup 50, 30, 20. Because the judges are in the mindset कि it has नहीं, ये गलत एडवाइस है मैडम. So these two are the wrong advice he is giving to in his lecture. That's What is the breakup, Dr. Raj? She is talking about. When he gave this advice, I went to this national insurance. He said, "Doctor, वो गलत advice है." So it has been clear now. Thank you, Dr. Giten. Dr. Leena, you can take Yes. question number 12 and 13, please. I think 12 has already been answered. No, what all litigations they do not cover Yes. that question. So, what all litigations they do not cover, but I think Dr. Geetendra can reiterate it because he had already very nicely mentioned in his presentation. Dr. Geetendra, if you could just, because people are hearing, so I think this is very important. मैडम मैंने बताया जैसे कि क्रिमिनल लिटिगेशंस आर नॉट कवर्ड, देन लिटिगेशन अंडर स्पेसिफिक, जैसे पॉक्सो का केस आप पे हो गया, या आप स्टेट मेडिकल काउंसिल या नेशनल मेडिकल से आपको नोटिस आ गई, या सीएमओ की ऑफिस में किसी ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत कोई केस कर दिया, या सेक्स डिटर्मिनेशन का पीएमडीटी का केस हो गया, तो दीज आर बायोमेडिकल वेस्ट का केस हो गया. So these are all the special acts which are not, and cases filed under these special acts are not covered under any insurance. Biomedical also, sir? Yes, Yeah, biomedical also. So Biomedical MTP also, तो बहुत सारे cases CI, आते हैं. and any query which has been brought in by the CMO, if we get a notice from that side. खाली compensation के केस कवर करेंगे मैडम. Only compensation. And what about defamation, Dr. Geetendra? Not, he Not said covered. No, Not covered. not covered. Not covered. Can Anything- I interrupt? Dr. And no Ila has plastic a question. surgery, not dental Not treatment, there. then drugs that you have taken, influence of alcohol if you operate. So all these things, none of these come under the any kind of thing from the Indemnity company. cover. Can I ask a question, Leena? From Yes, outside? please. The thing is that MTP I think should be covered, sir, because उसमें तो कितने सारे cases बना देते हैं कि आज हमने एक MTP bill दी है, Exactly. MTP की, No, और no. consent लिया हुआ है, Madam, I will और like फिर उन to- दोनों के yeah. बीच में divorce मैं का आपको- वो बनता है, तो फिर उनके lawyer आके हमें बताते हैं नहीं। कि आपने जबरदस्ती MTP की है, नहीं तो- पर liable हाँ. to- तो वो सारे जो केस होते हैं ना मैडम, जो जबरदस्ती एमटीपी की है, दे आर नोन एज क्रिमिनल केसेस. वो 313 फाइल करते हैं कि मेरी कंसेंट के बिना कर दिया. क्रिमिनल ऐसे ही नहीं लेंगे. आईपीसी की कॉलम होती है और एमटीपी में भी ऑल लायबिलिटीज आर क्रिमिनल लायबिलिटीज, जिसमें 2 से 7 साल की I have been the sufferer, भाई. सो अगर आपने एमटीपी किया है, किसी को कॉर्पोरेशन हुआ है और उसको अगर कोई लॉस हुआ है और वो कंपनसेशन के लिए डिमांड, देन दे विल कवर, बट दे विल नॉट कवर क्रिमिनल लिटिगेशन. आई थिंक डॉक्टर गीतेन आपका जो मतलब क्रक्स है वो ये कि अबाइडेंस टू नेशनल अवर लॉ ऑफ अवर लैंड इज द मस्ट. That is not the part of insurance. It is only after the omission or something commission. So law of land is nothing we have to do, and we have to go through the different approaches. Right. So, there was a question by Dr. Ila, which I am putting up, कि if compensation is granted, how affiliated insurance company fulfill the requirements completely or partly, and reasons for them to deduct the money. मैडम, वो आपकी पॉलिसी की जो टर्म्स कंडीशन होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट दे विल पे एंड दे विल नॉट पे. सपोज फॉर एग्जांपल you have taken insurance of 1 crore rupees, but your ratio is 1:4. Now suppose a compensation awarded against you is 30 lakhs, so they will only pay 25 lakhs. And if the interest is above than that, they will not pay. No. But if the insurance, the interest is within that amount,
They will pay. They will pay, sure. So it's absolute. They will pay only the amount they have insured us. Yes. Whether it is in the 1:1 or 1:4 ratio. 1:1. So thank you, Dr. कहने का मतलब है पैसा तो आपको मिल जाएगा पर आखिरी में मिलेगा. मिलेगा. That is very important. So first we have to incur the loss and then we get it from the insurance company. But first we have to incur it. That too also depends how much are we getting. Exactly. So one thing what I get it, first whenever you anticipate or you have any legal notice, you have to look for your documents properly. Then you have to seek an advice from your medical person, expert opinion. Then you go prepare your paper and then you take an opinion by the medical legal expert and giving all the references and everything. I think that is the way one should prepare her case. And then after the medical legal expert, under his guidance, the legal person can file the case. Madam, we have come across not less than 100 cases where doctor receives some notice and they casually reply that notice first. And your first reply has to be with the excellent. Perfect. और बाद में हम सोचते हैं कि आपने रिप्लाई दे कैसे दिया. बाद में हमारे पास आते हैं तो हम चेंज करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते. So एक और question है. This part should be very clear. Your first reply anywhere you've given is the last reply. In last month, madam, I have received 5 cases from Lucknow. 5 cases. Already decided by commission that you have to pay. In one case it was 72 lakhs, in another case 57 lakhs. Like that there are 5 cases. So already lost. Now doctors have come to me. Sir, अब अपील में आप बचाइए. अब जब उनका हमने केस देखा, so the thing which you are supposed to put in your defense, you had not put. And in appeal, you are not allowed to add anything. Only questions of law will be discussed, not the questions of facts. So आप कुछ नया डालना चाहते हो तो भी they will not allow you to put inside. So that is the problem of our doctors. That जब फंस जाते हैं सब कुछ दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके बाद they come to it. And this is what we doctors are lacking, the knowledge. So what we are asking everybody that you should even not answer the first notice without proper advice. Proper advice, आप first notice के reply के time proper advice लेंगे, you will be saved. Exactly. I think that's a wonderful message that you are carrying out. So one more question. Sir, if I have put 4 hospitals, suppose in my indemnity, and I've joined one more hospital, will that hospital will also be covered? आपको inform कर देना चाहिए. Inform कर दे. Inform. ठीक है. Yeah. Another thing, the doctors, they have joined one hospital and then they are going to the various clinics also. Even if anything goes wrong in that clinic, and if you have not added in your insurance, even if you have not added, they will cover it. ऐसा नहीं है, because you as an individual can go anywhere. Has been covered. Yes. No, if it is written that it is covered in all over part of the India, then only they will cover. Yes, but it is better to inform. Yeah. There was one very interesting question which I saw in the chat box, Dr. Geetendra. Has anybody had an experience with cover you, since we were all mentioning the group insurance policy? So this is a very interesting question put in the chat box. I really want this answer from And you, I don't have much anybody. experience. I don't have much experience, but definitely they have Cover You company has approached me in multiple cases to give medical legal advice to Foxy members. But again, they are not paying that much. So out of only our, we think that it is duty to support our colleagues. That's why we only support. Otherwise, with 10,000 rupees consultation fee, we never give our services. So they are only paying 10,000 rupees, in which no medical legal practitioner will ever guide. They even promise an out-of-court settlement, one of the few which is not advisable. Pratibha Garg has also raised her hand. Pratibha Garg? Dr. Pratibha, please. Dr. Pratibha. Unmute yourself, Dr. Pratibha. You're muted.
Yeah. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Ma'am, it was by mistake. Okay. कोई बात नहीं, कुछ पूछ लो. उसको पूछ लो. Dr. Sonal, are you there? Yes, So, yes, he please. was here, yeah. He Can was you here. please ask Pratima question number Jain and 14 and 15? It's there in the group. Question number 14. Will the insurance Sorry, be I don't covering the have- defamation suit by, like if there is a defamation suit, sir, will it be covered? He said no. He's already answered that. Yeah, All right. He has that is already And answered that. yes, Dr. Sonal, please. डॉक्टर continue. गीतेन ये एक बात बोलते हैं, इंडेमनिटी इंश्योरेंस तो नहीं करेगी, लेकिन कभी कभी क्या डॉक्टर्स अपने से भी अगर लड़े तो आपका क्या सहाय होगा, क्योंकि ये डिफेमेशन किया और किसी को बहुत मतलब हर्ट कर रहा है, हमको डिफेम कर रहा है, तो अगर हम इंडिविजुअली जैसे आपके संग मिलके केस लड़े तो क्या उसका खर्चा और कुछ उसका फायदा Exactly. होता है. कभी कभी डिफेम से बहुत फेम भी हो जाता है. Right. तो आपका डॉक्टर गीतेन क्या ओपिनियन है आपकी? मैडम, हम तो ये बोलते हैं कि नथिंग कैन डिफेम यू, है ना. अगर आपको कोई डिफेम कर सकता है, इसका मतलब आपने कभी फेम पाई नहीं. आई हैव सीन मल्टीपल केसेस वेयर मल्टीपल सूट्स आर बीन फाइल्ड अगेंस्ट डॉक्टर, और उन डॉक्टर की प्रैक्टिस अभी भी डबल होती जा रही है. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मेरा वो एक बार मैंने मेरे बताया केस में भी यही हुआ. वो कहते नाम तो हो गया ना तुम्हारा, बदनाम हुआ तो क्या हुआ. बस वो मेरा पता चला, पता नहीं क्या क्या हुआ मेरा, लेकिन वो देखा कि मुझे लगता है कि प्रैक्टिस मेरे को संभालना मुश्किल हो गया. Dr. Sadhna, it is like the movies, you know, just before the release, there will be some scandal. तो सब लोग वो पिक्चर देखने जाएंगे. जरूर जाएंगे. डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो प्रैक्टिस करेगा वो तो फंसेगा तो जरूर. मैडम, ये सब टेम्परेरी चीजें होती हैं. I always give one example. There is one surgeon doctor who was practicing in front of my hospital in Ahmedabad, and you know, one nurse who was working with him had filed rape case against the doctor. है ना. अभी उस और that was the fact. Whatever was mentioned was right, है ना. But सब national news में आ गया, सब आ गया. Now that doctor and his wife daily came, used to come to me. सर कुछ करिए, कुछ करिए. मैं उनको हमेशा एक चीज बोलता था कि ये मीडिया की जो लाइफ होती है ना, मेमोरी होती है, बहुत छोटी होती है. 2-3 दिन मीडिया में आएगा, सब शांत हो जाएगा, उनको टीआरपी मिल जाएगी, खत्म हो जाएगा. उसके बाद तो आप दोनों को ही साथ में रहना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर. एंड अल्टीमेटली आज की उनको ये था कि हमारी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी, पूरे एरिया में हमारा ये हो गया, नाम बदनाम हो गया है. बट स्टिल आज उनकी डबल ट्रिपल प्रैक्टिस है जो पहले प्रैक्टिस, और किसी को याद नहीं है क्या हुआ. Dr. Geetendra, I remember the same line जो आपने अभी बताई है. You told me once when I had spoken to you. You know, we were all in the preventive medical legal consultancy. I think that is one of the wonderful initiatives that Dr. Sharda ma'am had started, had asked us to be with it. And I remember you told me the same thing. It's a very short time thing. You can find defamation. If you want, you can do it. Every doctor can. But remember, the memory is very short. It hurts a lot, like it hurts any other doctor. But I think we have to develop a very thick skin when we have these kind of things, and we should remember that, you know, the memory of people is very, very short. So, you know, that is also very nice, that the way you you know, explained that इसमें तो कुछ रहा ही नहीं, and you know, the memory of people is going to be very short. Madam, in my whole life, I have never seen a case filed by doctor for defamation. Yes. Against patient and winning the case. Correct. अगर आपको डिफेमेशन के लिए सजा चाहिए तो आपको राहुल गांधी बनना पड़ेगा. I think we should take these as learning experiences. Right. We have to give this message to our colleagues that please don't get frightened of cases. मैंने तो डॉक्टर साहब, let me be very frank with you. I have had multiple cases against me. You have to face them. It definitely disturbs you. You know, it shakes your integrity and things like that. देखो इसके लिए किया और ये देखो मुझको फंसा दिया फालतू में. और मैंने तो एक चीज और भी देखी है कि ये चेयरमैन अस्पतालों में बनना, ये बिल्कुल वाहियात चीज है.
आपको वो डॉक्टर लड़की तो निकल जाएगी और आपका चेयरमैन का नाम ऊपर सबसे पहले आ जाएगा। सो नो एवरी केस अगर आपका कहीं नाम भी आ गया 1 लाख रुपए तो आपके खर्च हो जाएंगे, चाहे वो पहली हियरिंग में आपको बाहर कर देगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये सब ये तगमे फगमे सब बेकार की चीजें हैं। और ये लर्निंग एक्सपीरियंस, आई हैव सीन टॉप गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ द सिटी व्हेन दे हैव लीगल केसेस अगेंस्ट देम, उनकी पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, चेंज हो जाती है। Depressed, they just don't feel like doing anything. You ask their relatives, they will tell you what is the situation she's going through it, and you have to stand for them. You have to stand for them and give them a little confidence, and then take the medical expert's advice over and above what advice you can give it to them. And I think it is a rehabilitation, I call. This is a rehabilitation process, and I think at least this particular group of 33 people is prepared for that particular thing. But what I realized today is that talking to 50 people is not enough. Dwarka, you have to take it. East Delhi, we have to take it. Everybody should know about it, what all is about it, because everybody is concerned about it. Absolutely, ma'am. I think that is the crux of this entire deliberation that we've had today, that we have to spread it. And you rightly said that in whatever capacity we are, we should support our colleagues, because this is so very important that, if a small complaint or a defamation kind of a thing can hurt people so much, then when there is something major like a case which has been put across, the entire personality of the person changes. So I think we need to be supportive. It is like this, that आप वो ऐसे समझते हैं जैसे आपको HIV हो गया। Exactly. आपको हाथ लगा लेंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। सच बता रही हूँ मैं, कोई साथ नहीं आता। राज बुकारिया बताएगी, इतने बड़े अस्पताल में एक जना भी इसके साथ नहीं खड़ा। शंकुंतला बताएगी, इतने बड़े दुनिया में उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। डॉक्टर सोनल बताएंगे, उसके पूरे अस्पताल में उसके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। Nobody comes for you. Yes. And another important thing is that when you file a reply, you must answer what question has been raised. Don't go haywire. And give reference to the point. And give reference to the point and give the reference. डॉक्टर सोनल, ये आपने बहुत जरूरी बात की कि जब आपके पास छोटा सा भी कंप्लेंट आता है, एक्चुअली हम सारा काम छोड़ के डॉक्टर गीतेन सारी किताबों को हम फिर से पढ़ते हैं, और क्या क्या चीजें में हमारे फेवर में, वो आपका लॉयर भी नहीं कर सकता। कई बार वो हम ही करते हैं। You have to do it yourself. You have to work 100 times harder what you do in the presentation or something writing, क्योंकि वो आपकी इज्जत का सवाल है। और what डॉक्टर मैडम शारदा जैन कहती है कि हम सबको फाइट बैक करने की एक आदत, मतलब we have to create that generation that we can fight back. And we know how to reply, we know how to make presentations, so we can do it. Basically, we should stop feeling, it's like a surgeon. If there is a small bleed, the surgeon always thinks कि उसका knot खुल गया, bleeding हो गई. We always tend to think that we are in the wrong. Somehow we've got to get out of this kind of feeling that, everything and everything. I'm not saying that we can't go wrong, but we have to understand that, it's like very natural, for every surgeon to think that something has gone wrong with themselves. We've got to get out of this. Right. Ma'am, another important thing is that every procedure is associated with a good percentage of complications. So I think once ma'am, Dr. Sharda Jain also raised this point that as the RCOG people do, we should compile the data that which procedure is associated with how much complication, and we should explain all these things to our patients when in the OPD only. Right. That's a very good suggestion. Form, no? That has to be given in the consent form per se. Yes. Yes. Madam, unmute yourself. Ma'am, you are muted. आप सब समझाते थे, पर वो जो डॉक्टर साहब ये डॉक्टर लोगों की डिटेल्ड है आपकी 3-4 पेजेस की, वो मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में देती हूँ कि मैडम इसको अच्छी तरह से एवरी लाइन यू मस्ट and before you come for the surgery you put a second signatures. So I think you must give them a detail in spite of explaining everything. That they should go through it. Yes. And preferably do it yourself instead of leaving it to the junior most person. Junior most. वो वाली बात तो डॉक्टर खत्म है, बट ये केस हो जाने के बाद कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होता, कितने भी फोरम, फालतू की चीजें, सब चीजें। मैम ये स्टार्ट करना चाहिए ना हम लोगों को। डॉक्टर शकुंतला, आप बोलोगे नहीं फालतू की चीजें?
मैम 200%। मैम तो सबके साथ खड़ी होती हैं। मैं बोरिंग तो तो फालतू की चीज है डॉक्टर साहब। That is why, ma'am, you are the inspiring Social figure media, here. Because अगर कुछ भी we've एक seen बार how you कुछ हो गया, supported in the डॉक्टर platforms. मैं आज डिस्कस करूंगी डॉक्टर राज बुकारिया का केस। इट हैपेंड समथिंग 17-18 years बैक। तो क्या उसमें कुछ नहीं डॉक्टर साहब उसके केस के अंदर। वी वेंट टू कॉन्फ्रेंस हुई फॉक्सी की गुरुग्राम में। मैं राज बुकारिया और डॉक्टर उमा राय वहां गए। हमने सोचा ये फॉक्सी वाले लोग हमारे को एक दो नजर मिला लेंगे डॉक्टर साहब। वो तो हमने कहा हमें केस डिस्कस करना राज बुकारिया का। कौन सी डॉक्टर शारदा जैन, कौन सी डॉक्टर उमा राय, एक मिनट नहीं दिया उन्होंने। फिर हम लोग गए, चक्कर लगाए हमने एओजीडी को। एओजीडी तो उनसे भी ज्यादा उस्ताद, कुछ लिखने के लिए कुछ तैयारी नहीं। फिर हमने डॉक्टर साहब तब हम लोगों ने दिल्ली गायनेकोलॉजिस्ट फोरम का ये लीगल सेल बनाया और 4 प्रोफेसर्स को बुला के डॉक्टर साहब इसका केस डिस्कस किया, जो भी कुछ है। सो दैट इज द वे यू नीड टू कम एंड हेल्प। आई फाइंड इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉक्सी एंड एओजीडी, उनके क्योंकि केसेस होते नहीं, मेडिकल कॉलेज में है तो वो सोचते हैं कि वो तो भाई इम्यून है, और ये प्रॉब्लम प्राइवेट प्रैक्टिशनर की फालतू में है, इनको क्या मदद करना डॉक्टर साहब। अब तो ये चेंज हो गए डॉक्टर साहब। आपने तो मैडम एक लेटर भी लिखा था with so many people to AOGD, they never replied. They never replied, responded. doctor. And Madam, you have written on email to the Foxy people. They also didn't reply. कोई अप्लाई नहीं करता डॉक्टर साहब। मैडम विथ योर परमिशन एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। सी वी आर गोइंग टू हैव वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस फॉक्सी एट अहमदाबाद, और उसमें 2 दिन की प्योरली नेशनल मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस है ना। बस गीतेन सबको वोट पड़वा देना, सब ट्रेवल में वोट डालना ना भूल जाए। तो आई इनवाइट एवरीबॉडी टू अहमदाबाद। वोट नहीं डाले उस समय। जिसको भी फैकल्टी बनना हो, अगर कोई इंटरेस्ट हो, नेशनल मेडिको लीगल कॉन्फ्रेंस है तो कानून की पाठशाला में ऑल आर इनवाइटेड। मैडम वोट पढ़वा देंगे। एक पैराडाइम शिफ्ट आपको करना पड़ेगा मैडम। आपको ये जो डिवाइड है ना इन द वेरियस एसोसिएशंस, इसको घटाना पड़ेगा, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉक्सी स्टैंड्स फॉर द डॉक्टर्स। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द आवर। Yes, madam. I think And that is the Foxy and most subsets important also. thing. Subsets also, individual, Yes. जैसे दिल्ली का गायनी फोरम है, it should be parallel. That Foxy has a bigger, and these also should have smaller cells. तो सब अपनी association तो अपनी association को ही contact करेंगे ना, wherever you Ma'am, are. can I say one thing? मेरी अपनी भी The Foxy has to be like you, ma'am. Only you are the one who stands for everyone. It's not only for me. बिल्कुल क्लियर है। आई स्टैंड बिकॉज आई हैव सफर्ड मेनी केसेस। नोबडी गिव्स, मुझको किसी ने शोल्डर नहीं दिया, बट एट द सेम टाइम आई हैव लर्नड इट इन अ वेरी हार्ड वे। एंड क्योंकि मैं मेडिको या डीएमसी की एक्सपर्ट रही हूँ तो मुझे मालूम है कि कैसे केसेस आते हैं। मैडम आपने तो मुझे एक एक स्टेप पे वो सपोर्ट किया है। यू हैव गॉन टू द पुलिस थाना विथ मी। डॉक्टर साहब इसको पुलिस वाले बुला लिए। रात को 8 बजे हम और राज उनके पुलिस थाने में बेंच पे बैठे हुए। डॉक्टर साहब, कैन यू बीट इट? हाउ कैन राज गो अलोन डॉक्टर साहब? Not at all, ma'am. Not at all. Not at all. Once It is so. I get elected, मैं तो शकुंतला का केस देखा था ना डॉक्टर साहब, ऐसी न्यूज हो गई शकुंतला के केस के अंदर जैसे पेज 3 की न्यूज है। Everybody was worse than the television people. Anchor. So Dr. Raj, Dr. Sharda, and Dr. Geeta, and Dr. Sonal, each one of you, Rajkumari, Leena. So we have such a good experience, and we will make a change in Foxy definitely. डॉक्टर साहब आप फॉक्सी Thank you, ma'am. डॉक्टर यहाँ पे बात करें। डॉक्टर गीतेंद्र कहते हैं कि आप जलंधर होके आई और जलंधर होने के बाद भी उनको ये नहीं मालूम कि एनआईजीएफ क्या है। नहीं मैडम, उतना पॉपुलर भले ही, क्योंकि वो कॉलेज का मैडम फंक्शन था तो मैं थोड़े विजिट के लिए जाए थे, लेकिन वहाँ के कई लोग मेंबर्स हैं, बहुत सारे लोग मेंबर्स। डॉक्टर साहब आप एक लिस्ट पकड़ाइए प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की, हम लोग अब बैठकर फोन करना तो शुरू करें। डॉक्टर साहब 10 लोग तो इसी इंचार्ज बनाओ। कर रहे हैं मैडम, फोन कर रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं फोन। आपके अकेले से नहीं होगा, आप मुझको भी नंबर दे दो पंजाब के। जी मैडम, ये लोग बनना, बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। वंदना से नहीं होगा डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। ये सही बात है। सोच रहे हो कि वंदना होगा वहाँ पे,
किसी प्रोफेसर के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा डॉक्टर साहब, नहीं होगा मैम। वो हमसे पढ़े लिखे होंगे, वही उन्हीं मैडम आप फोन करेंगे तब तो विजय वैसे ही नहीं, बिल्कुल मैं आपको। अच्छा देखो हमारा तो इन्फ्लुएंस पंजाब में, हमारा इन्फ्लुएंस हरियाणा में, हमारा इन्फ्लुएंस चंडीगढ़ में। मैडम मैं कल ही आपको सारी वोटिंग लिस्ट दे देती हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी, अगर मैडम भैया डॉक्टर गीतेंद्र को बोलते कि कौन क्या है, तो ये तो भैया बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर गीतेंद्र आज मुझको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ NIGF? मैंने कहा द फ्यूचर ऑफ NIGF 10 years from now it will have 12,000 members. Yes. Whether I'll be there or not. इसमें किसी की कोई हिडन एजेंडा नहीं है और बिल्कुल क्लियर है ये करना है। अब मुझे ये पता चल गया आज की फोकस के बाद कि ये कानून की पाठशाला को हमने हर फोरम में लेकर जाना है। ये प्रेसेंटा प्रीविया, ये LSCS, ये विजाइनल वेजिनोसिस, ये सब फालतू की चीज है डॉक्टर साहब। वो सब आ जाता है मैम, वो सब तो समझ लेते हैं, पर ये चीज समझ में नहीं आई। मैम उसमें भी तो मेडिको लीगल होएगा उन सारे केसेस में, उसी को डिस्कस कर। ज्यादा चीज सबसे ज्यादा परेशान करता है। जैसे डॉक्टर सोनल बाटला करती है, दीज आर लर्निंग एक्सपीरियंसेस लाइफ। यू डिसाइड अबाउट इट कि इवनिंग प्रैक्टिस नहीं करनी, सुबह की प्रैक्टिस। शाम की तो टाइम लर्निंग लेसन्स इन लाइफ डॉक्टर साहब, दीज आर लर्निंग लेसन्स। These are learning lessons in life. बट डॉक्टर गोविंद ने हमें सब पढ़ दिखा के बता दिया कि यू नो कुछ नहीं साथ तुम्हारे जाना, क्यों अपने परेशान हो रही हो डॉक्टर साहब? Stay peace, stay peace. बट ये जो गूगल वाले जो है ना, वो सैटरडे उनका ऑफ होता है, तो वो सैटरडे मॉर्निंग आ जाएंगे। वो सब नहीं आ पाते ना, फिर लोड हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आई रियलाइज ऑन द 18th आई रियलाइज, क्योंकि वहां पे किसी का हिडन एजेंडा नहीं था। At least every people who smiled at each other were genuine smiles. Absolutely. They were genuine smiles. Ma'am, that was glow of NIGF. Yes. No. What I'm trying to, किसी का हिडन एजेंडा तो है नहीं ना, वंदना का ना शारदा जैन का। तो डॉक्टर साहब, हिडन एजेंडा नहीं, तो आप स्माइल करोगे तो अच्छी तरह से स्माइल करोगे। It was a great bonhomie. I tell you. Yes. मैंने तो देखा ना, जब ये बात हुई कि नॉर्थ इंडिया का आपकी बारे ऑल इंडिया जो है यहाँ आना चाहिए, तो मैंने देखा दूर से डॉक्टर मैडम अमिता आई, मैडम के पैर छुए उन्होंने, मैडम उषा के। जब हम लोगों ने कहा मैडम उषा आप करोगे तो सब कुछ हो जाएगा, और दूर से भाग के आई। So it was a real smiles I could find, that it was very soothing and nice. Very, very nice. Thank you very much, Dr. Geetendra Sharma. We find a great brother in you, that you are especially for Delhi people, you are very big help to everybody. But somehow I can't say change the psyche of the people. I will try to change the psyche of the people, because you know, in the last 15 days I have had 2 cases of gynecologists in East Delhi, and they lost patients for PPH, and they did their best. But you know, you can see their personality shaken up. ऐसे लगे कि बस अभी गिरेंगे ये लोग। मैडम जब मेरा केस हुआ था मेरी भी यही हालत थी। मैं तो डॉक्टर सोनल बाटला को बड़ा स्ट्रॉन्ग समझती हूँ। मैंने सोनल बाटला को देखा है। So everybody changes, doctor. Everybody changes. This is a learning experience. Because your people are not with you. आपके कॉलेज, आपके हॉस्पिटल के लोग ही आपके साथ नहीं खड़े, वो सबसे ज्यादा डिसहार्टनिंग बात है। Dr. Bukaria, you've been friends with your people, you work together in a team, 3 of you. 2 लोग आपके 15 साल से आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते कि डॉक्टर राज बुकारिया नाम की कोई चीज भी है। नहीं, उसी वजह से डॉक्टर राज बुकारिया, even the hospital doesn't support you. I got the legal notice by the medical superintendent, and she never asked me how you are going to the police thana. I have to go alone. Dr. Raj, you are on a better platform today. You are on a bigger platform. You are more learned, ma'am. Dr. Bukaria single-heartedly is taking care of this medical legal cell. It's just because he has been paid. It's all because of you and Dr. Geetendra and everyone. Support of Dr. Leena and Shakuntla is too much. It's always there, ma'am. And Dr. Geetendra तो बिल्कुल ही मैं कह नहीं सकती, ma'am. He's always there for us. It was a wonderful panel we had that day. डॉक्टर गौरव अग्रवाल को आरोपित करो अपने ग्रुप में। नहीं, but he is also there always, ma'am. एक मैसेज देती हूँ and he always say yes. He's never said no to me.
नहीं East Delhi में भी डॉक्टर साहब I find East Delhi all around area Gaurav is very popular, very popular. Anytime, ma'am, anytime, and always there with my sisters. He's always there in no He's second. always not only now. I've known you for many years. डॉक्टर गौरव तो द्वारका भी आ गए थे. I know him from now only, but he has been excellent in supporting, always there with us. He has never said, no, I won't join this webinar or I won't give the lecture, whatever it is. Thank you, ma'am. Immediately he always replies, yes. Wind up, madam. Thank you, Dr. Gaurav. Thank you very much. And I'll This just G word is very, I think, pro for the doctors. Dr. Gaurav, Dr. Gitendra. रिकॉर्डिंग जरूर करना डॉक्टर साहब 2 days की. जी मैडम पक्का. मेरे को रिकॉर्डिंग जरूर दीजिएगा डॉक्टर साहब. पक्का मैडम पक्का. ठीक है. So thank you very much for this excellent Kanun Ki Pathshala. There were lots of take-home messages. Apart from thanking our star speaker, Dr. Geetendra, for his talk and the wonderful inputs that we got from our chairpersons, all of them who have stayed right till the end. I mean, I thank you very much for being in this Kanun Ki Pathshala. A short take-home messages for those who are still listening in. Professional indemnity insurance is for all. It doesn't matter whether you're in the government or the private sector. Check that your insurance is in the 1:1 ratio. Retroactive date is very important. There should be no gap in the retroactive date. Should you be changing from one insurance company to the other, make sure that it is event-based indemnity and not a claim-based. These are things, check in your whatever insurance company that you have taken today itself. It covers errors and omissions in the practice of a practitioner. To some extent, in some insurance companies, they also cover the lawyer's expenses. There is a whole list of things that it does not cover, and therefore you should be very clear about what your insurance policy covers and what doesn't. Group policies are good, but what is more important is that you should have a good lawyer should you land up in a problem. In group policies, the premiums are reduced. They do provide some help in criminal cases. Medical legal consultation is very important. Take every notice, however, from wherever it may come, even if it comes from the CMO's office, take it like a legal notice and reply to it word by word. Take the help of a medical legal consultant and make sure that that you take an insurance policy for a good amount. Yes, the minimum that you must take is 1 crore. The maximum is whatever you feel you want to take beyond that. I think the important points I have covered. If anybody would like to add the take-home messages, anything more than this? Whenever you are reading this policy, there are some things, they're written in very small words. I think we should read each and every line as a disclaimer. They give a very big line, there are big paragraphs. We should read everything very carefully before, taking up and signing. I think that is very professional reading करने से क्या होगा, understand भी तो करना पड़ेगा. We are not able to understand, so we need person like Dr. Geetendra. One wonderful thing that happened with our last if you become the president, please ये सब change करा देना. बिल्कुल. We are really looking up to you, madam. मैडम फॉक्सी में तो कोई भी टीम मोर अब फॉक्सी में तो कोई भी टीम बनेगी ना, उसमें 7 में से 5 मेंबर बॉम्बे के ही होने वाले हैं. नहीं. जरूरी नहीं है. अगर नॉर्थ यूनाइट नहीं हुआ तो यही रहने वाला है. वो भी बदलना है. When you talked about things in the small print, when your last talk on professional indemnity, I went back and I opened the document and I read it. I spent time on it, and it is very true what Shakuntla is just mentioning. You actually need a magnifying glass to actually see the fine print. It is so small and so, everything is written Madam, whether you read or anything, they can't change a single line for you. We cannot change. We cannot change. 10 बार पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगा. Yes. How it is interpreted, it all depends. I'll share the PDF file today by mail to everybody. In the group में डाल दूंगा. PDF file मेरे पास कल ही आई है, national की indemnity policy की.
ठीक है सर. Okay, okay. Thank you so much. Thank you. So thank you very much for being here, and let's go and have a hearty dinner. Thank you so much. Thank